Hello everyone. So in this lecture, we will be going to deal with some very basic terminologies, but they are very important. First of all, data. Okay. So what is data? We know their collection of data objects and their attributes. Okay, data is a collection of data objects and their attributes. And what do we mean by attribute? Attributes are the properties. यहाँ पे हमने लिखा है definition. An attribute is a property or characteristic of an object. Like our eye color of a person, temperature of a room, they are the attributes, right? Whose values will be changing. So that's why attributes is also known as a variable field characteristics of feature. Now you got it that this like TID. In this example, if you can see, these are the attributes. Just give me a moment. So this example, if you can see here, this is attributes. TID is an attribute, refund, martial, marital status, then टैक्सेबल इनकम सीट, ये हर एक क्या है एट्रीब्यूट है. अब इन सबको मिला के हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स. लाइक ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज ए रिकॉर्ड, पॉइंट, केस, सैंपल, एंटिटी, इंस्टेंस, राइट. वेरियस नेम्स आर देयर. तो इन सबको हमने क्या बोला है, एक साथ ऑब्जेक्ट्स बोला है. Is this clear? So data क्या है? Collection of data objects and their attributes. Now attribute values. Attribute values are the numbers or symbols assigned to an attribute. Distinction between attributes and attribute values. Same attribute can be mapped to different attribute values. Like height can be measured in feet or meters. ठीक है. हाइट को हम क्या फीट से भी हम मेजर कर सकते हैं या तो मीटर से भी कर सकते हैं, राइट. सो मीटर में भी कर सकते हैं, फीट में भी कर सकते हैं. तो दिस वैल्यूज are different but attribute is same. And what is that attribute? Height. ठीक है. Now different attributes can be mapped to the same set of values. Like attribute values for ID and age are integers. But properties of attribute values can be different. ID has no limit, but age has a maximum and minimum value. तो हमने क्या सीखा कि attribute values क्या है, numbers है, right? और attributes और attribute values के बीच क्या difference है? Same attribute को हम different attribute values में map कर सकते हैं. जैसे height को हमने feet और meter में किया था. बट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम क्या कर सकते हैं, कैन बी मैप टू सेम सेट ऑफ वैल्यूज. जैसे आपका आईडी और एज दोनों क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बट प्रॉपर्टी सेंस हो सकता है. आईडी का कोई लिमिट नहीं है बट एज का लिमिट है, मिनिमम एंड मैक्सिमम. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. देयर आर three different types of attributes. First is nominal. Example, ID numbers, eye color, zip code, ये सब जो है ये nominal attributes है. Then ordinals. Ordinals examples like rankings, as for example, say taste of potato chips on a scale from 1 to 10. Grades हो गया, height in tall, medium, short, ये सब में अगर हम यूज कर रहे हैं तो they will be ordinal attributes. Similarly, we have interval. Examples like, calendar date, temperatures in Celsius or Fahrenheit, ये सब आपका आ जाएगा इंटरवल में. ठीक है. Then ratio, temperature in Kelvin, length, time, counts. So they will be the ratios. तो nominal समझ में आ गया, ordinal and interval and ratio. Now, properties of attributes values.
the type of an attribute depends on which of the following properties it possesses. Like, distinctness, order. Distinctness means either क्या हो सकता है, equal हो सकता है or not equal हो सकता है, right? Order, less than or greater than. Addition, plus, minus. Multiplication, star, division. So these are some what it's kind of properties. So nominal attributes, distinctness हो सकता है, ordinal attributes में distinctness and order ये हो सकता है, right? Interval attribute में सब आ जाएगा, distinctness, order and addition. Ratio attribute में all four properties. Now, attribute type, description, example, and operations. Nominal. The values of a nominal attribute are just different names. That is, nominal attributes provide only enough information to distinguish one object from another, either equal or not equal. अगर example मैंने पहले भी दिया था, क्या होगा आपका, like zip codes, माने pin codes, employee ID numbers, eye color, sex. So these are some example of nominal. और nominal में हमारे पास जो property है distinguishing है, मतलब either equal हो सकता है या तो not equal. Operations क्या क्या कर सकते हैं, मोड, एंट्रोपी, contingency, correlations, right? Like Schwarz test. So these are the operations that we can do with in nominal attributes. Similarly, ordinal. So ordinals means what? It provides enough information to order objects, like, good, better, best, grades, street numbers. They are some you can say comparisons, like हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हो हार्डनेस ऑफ मिनरल्स, लाइक गुड हो सकता है, बेटर हो सकता है, बेस हो सकता है, ग्रेड्स आपका क्या हो सकता है, ए बी. सो इसको कंपेयर कर सकते हैं, ए ग्रेड इज बेटर देन बी, ग्रेटर बी इज बेटर देन सी. ठीक है. देन इसमें क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, लाइक मीडियन, परसेंटाइल्स, रैंक कोरिलेशंस, रन टेस्ट, साइन टेस्ट, ये सब हम ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं. देन इंटरवल. फॉर इंटरवल एट्रीब्यूट्स द डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज आर मीनिंगफुल. A unit of measurement exists, like plus, minus. As for example, calendar dates, temperature in Celsius or Fahrenheit. ये आपका आ जाएगा इंटरवल, राइट. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, Pearson's correlations, right? TNF test. So these are the interval. याद रखना, इसमें हम ये प्लस माइनस मतलब ये एडिशन ऑपरेशंस आप हम कर सकते हैं. Then similarly, ratio. For ratio variables, both differences and ratios are meaningful. Temperature in Kelvin, monetary quantities, counts, age, mass, length, electrical current. तो ये आ जाएगा आपका रेशियो. ऑब्वियसली ये क्या है, रेशियो से. देन इसमें प्रोपोर्शन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, जियोमेट्रिक मीन्स, हार्मोनिक मीन्स, पार्शियल वेरिएशन. Again, let's see the differences. Attribute level, nominal, transformation, any permutation of the values. मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ. नॉमिनल में हम वो सारे वैल्यूज ले सकते हैं, those who can distinguish one object from another. The values of a nominal attribute are just different names, right? They provide enough information to distinguish one object from another. So any permutation of values, if all employee ID numbers were reassigned, would it make any difference? Then ordinal, an order preserving change of values, right? हमने क्या देखा था, हमने कंपेयर किया था ऑर्डिनल केस में ना. सो एन ऑर्डर प्रिजर्विंग चेंज ऑफ वैल्यूज, न्यू वैल्यू is equal to function of old value. So where f is a monotonic function, an attribute encompassing the notion of good, better, best can be represented equally well by the values 1, 2, 3 or 0.5, 1, 10 ऐसे. ठीक है. तो हमें यहाँ तो सिर्फ कंपेयर करना था. ऑब्वियसली गुड से ऊपर बेटर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3 बेस हो गया. या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 0.5, 1, 10. Then interval, new value is equal to a star all value, a multiplied by all value plus b, where a, b are constants. Thus,
Fahrenheit and Celsius temperature scales different in terms of where their zero value is and the size of a unit. Similar ratio, new value is equal to A into old value. So length can be measured in meters or feet. So that way we can change or transform the values. Okay. So these are very important, how these attribute labels and their transformations and how we can change the means old value to a new value. We have to take a note on that. Now, discrete and continuous attribute. Discrete attribute has only a finite or countably infinite set of values. Example, zip codes, counts, or the set of words in a collection of documents is of discrete type, right? And we often represent it as integer variables. Like binary attributes are a special case of discrete attributes. Continuous attribute has real numbers as attribute values, like temperature, height, ये सब क्या है? These are some continuous values, right? Temperature change हो सकता है 20 to 30 like that. Height, weight, so they are having some real numbers as their values, attributes value. Practically, real values can only be measured and represented using a finite number of digits. Now, continuous attributes are typically represented as a floating point variable. So you have seen it. Discrete, which has finite or countably infinite set of values. Countably, right? और continuous में हमारे पास वो सारे values है जो practically real values हैं, right? Now, next, types of data sets. आपको अलग अलग टाइप का डेटा सेट मिलेगा. डेटा सेट इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ द डेटा, राइट? सो लाइक रिकॉर्ड में आपका डेटा मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा आ जाएगा. ग्राफ में आपका वर्ल्ड वाइड वेब से मिलेगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. देन ऑर्डर में स्पेशियल डेटा, टेम्पोरल डेटा, राइट? सीक्वेंशियल डेटा, जेनेटिक सीक्वेंस डेटा. These are the ordered data. So remember, we have different types of data sets: record, graph, order. Now, important characteristics of structured data. So, structured data has few important characteristics like dimensionality, sparsity, and resolutions like that. I mean, dimensionality, they actually measure their attributes. Cars of dimensionality means if dimension increases, then also we may face some problems. And if it is very less, then also a problem, right? We need to maintain the balance. Sparsity, only presence count. Resolutions, patterns depends on the scales. Now let's take an example of record data. Data that consists of a collection of records, each of which consists of a fixed set of attributes. So you can see here TID, refund, martial status, taxable income sheet. तो यहाँ पे आपका collection of records है, right? 1 to 10 refund values are there, martial status are there, taxable incomes are there, similar receipt. So these together consists of record data. तो record data समझ में आ गया होगा. Normally we use this record data. Then data matrix. What is data matrix? This is important. If data objects have the same fixed set of numeric attributes, then the data objects can be thought of as points in a multi-dimensional space where each dimension represents a distinct attribute. I'm repeating again. If data objects have the same fixed set of numeric attributes, okay? Same मतलब fixed set of numeric attributes है, तो then data objects can be thought of as a points हम ले सकते हैं मल्टी डायमेंशनल स्पेस में. वो सारे डायमेंशन, वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम बता रहे हैं, ठीक है? वी आर टेकिंग दिस एट्रीब्यूट्स in different dimensions, and these data objects can be thought as points in that particular multi-dimensional space, where each dimension represents a distinct attribute, right? Such data set can be represented by one matrix, M by cross N matrix, where there are M rows
one for every object, each object, and n columns, n attributes, one for every or each attributes. So you can see here this example: projection of x load, projection of y load, distance, load, thickness. These are the values, right? So we are considering these all values in this particular matrix. In this, if you consider this matrix, how many rows are there? Right, basically these are two rows, including this T. So how many columns are there? 1, 2, 3, 4, 5. 3 cross 5. Then we have document data. Each document becomes a term vector, and each term is a component or attribute of the vector. Remember, जो हर एक document को हम एक term vector बोल रहे हैं, ठीक है? और every each term is a component of the vector. Now, the value of each component is the number of times the corresponding term occurs in that document. तो वैल्यू क्या है? जो पर्टिकुलर टर्म है कितना टाइम्स उस डॉक्यूमेंट में ऑकर हो रहा है. देख लो यहाँ पे वी आर टेकिंग डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3. Now there are a few terms here. You can see here season, timeout, loss, win, game, scope, ball, play, cost, team. Now ये जो team है, this term is being appeared 3 times in the document 1. So I told you, each document becomes a term vector. Now each term is a component of the vector. Now value of each component is the number of times the corresponding terms occurs in that document. So here team जो है, this appears 3 times in the document 1. Course appears 0 times in the document 1, but 7 times in the document 2. And 1 time in the document. Similarly, season appears 2 times in the document 1, so that's why we are putting this 2, and 0 times in both document 2 and 3, so that's why. So I hope this particular table is clear to you. ठीक है, हर एक इस साइड रो में हमने डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे टर्म्स. ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है एक वेक्टर हो गया, टर्म वेक्टर हो गया, और ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन ट्रांजैक्शन डेटा. This is a special type of record data where each record involves a set of times. Each record, transaction involves a set of items. Sorry. Now, each record consider, say, we are considering here a grocery store. Set of products purchased by a customer during one shopping trip constitute a transaction, while the individual products that were purchased are the items. यहाँ पे देख सकते हो, you can see here tree ID means transaction ID and items that is being bought in one transaction, right? So transaction 1 here, items mean what is bread, boy bread, coke and milk. Transaction 2, beer, bread. Transaction 3, beer, coke, diaper, milk, like that. Got it? So this type of transaction related information is known as transaction data. So this is a special type of record data only, but here each record involves a set of items, right? I hope it is clear. Okay, good. Now we have graph data. Graph data, we use in the case of Facebook or where generic graphs and HTML links you see in this example. This is a link, papers.html, BBB, data mining, graph partitioning, parallel solution of sparse linear system of equations, and body count computation, and dense linear system solvers. So the graph way, how they are linked to each other, we can show, and this is known as graph data. ठीक है. Similarly, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं एग्जाम्पल केमिकल डेटा में बेंच जीन मॉलिक्यूल C6H6 C1 2 3 4 5 6 H6 सब में एक एक हाइड्रोजन है. ठीक है. So I may not be good in the chemical data, but I can see that it is very clear from this graph, right? Similarly, it is very clear from this graph regarding generic graph and HTML links. Now, order data where sequence of transactions are maintained.
राइट। आइटम्स इवेंट्स ए बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी, देन बी डी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, सी डी बी ए, सो एन एलिमेंट ऑफ द sequence has been properly maintained. So genomic sequence data falls under this ordered data, and this sequence is very important in this case of genomic sequence data. यहाँ आप देख सकते हो GC, GG, TT, CG. So you cannot change this. It is very means crucial information. ठीक है, जहाँ पे order matter करता है आपका. Then spatio-temporal data. Yeah, you can see here average monthly temperature of land and ocean. It is that this value has been changing according to like there are colors. I hope you all know that what does it mean by the blue color and what does it mean by red color in such type of app. Now, I hope these different types of data definition is clear to you, like record data, data matrix, document data, transaction data, graph data, okay, order data. Now let's come to data quality. What kind of data quality problems? How can we detect problems with the data? What can we do about these problems? Examples of data quality problems like noise, outliers, missing values, duplicate data, ये सब quality को better करता है, ठीक है? Now noise refers to a modification of original values. Example, distortion of person's voice when talking on a poor phone and snow on television screen. नॉइस से हमारा जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो उसमें मॉडिफिकेशन आती है. दैट मॉडिफिकेशन में बी गुड और मे बी बैड ऑफ कोर्स. यहाँ इन दिस एग्जांपल आई एम गिविंग द डिस्टॉर्शन ऑफ ए वॉइस, पर्सनस वॉइस व्हाइल टॉकिंग ऑन अ पुअर फोन और स्नो ऑन टेलीविजन स्क्रीन. तो इससे क्या हो रहा है, हमारा ओरिजिनल जो डेटा है, ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है वो डिस्टॉर्ट होके आ रहा है. सो दिस इज नॉट गुड ऑफ कोर्स. दिस इज लाइक टू साइन वेव्स एंड दिस इज टू साइन वेव्स प्लस नॉइस. आउटलायर्स. तो नॉइस समझ में आ गया. नॉइस इज द सिंपल डेफिनेशन वुड बी अनवांटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है. Then we have outliers. Outliers are data objects with characteristics that are considerably different than most of the other data point objects in the data set. यहाँ आप देख सकते हो ये जो points है, they are different from the other, or you can say 90% of the other data. How? If we can consider the distance also, they are situated far away from the others. Similarly, you can consider one property, and from that property, or with respect to the value of the property, you can detect the outlier. They should behave differently than most of the other data. ठीक है. Then missing values. हाँ, missing values क्यों हो सकता है? आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन लेना भूल गए. So information is not collected. Like people decline to give their age. ये भी हो सकता है. Like girls don't want to give their weight, like just for joking. So there are some reasons where because of which information is not collected properly. So accordingly, missing values may be generated. Missing values will be there in the data set. So attribute may not be applicable to all cases. In this case also, suppose annual income, ये आप चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल नहीं कर सकते. जनरल इनकम इज नॉट एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन. तो इससे क्या होगा, मिसिंग वैल्यू होगा उस पार्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए, राइट. नाउ you got it that how missing values are being there in the data set. Next thing, we have to handle the missing values. Few ways are there, like eliminate data objects, estimate the missing values, right. Eliminate data objects means missing values ज्यादा है तो उसको हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं. We can calculate the missing values, right? Then we can ignore the missing values during analysis, or we can replace with all possible values weighted by their probabilities. ठीक है. Then duplicate data. Data set may include data objects that are duplicates or almost duplicates of one another.
And major issue when merging the data from heterogeneous sources, this is the major issue. Duplicate data is generated. Like same person with multiple email addresses. ठीक है? तो अगर हम heterogeneous और मतलब स्टोर से डाटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक जगह पे एक पर्सन का एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, दूसरी जगह पे दूसरा दे रहा है। तो जब मार्ज कर रहा है, बिकॉज ऑफ टू ईमेल आईडी वी आर हैविंग मींस टू rows generated for the same person. That is a duplicate data, of course. Data cleaning, process of dealing with the duplicate data set. We have to remove the duplicate data, redundant data. So that process is known as data cleaning. I hope you can recall the KDD process, right? There I told you data cleansing is one important part there. Data pre-processing. What type of tasks we can do for pre-processing? Aggregations कर सकते हैं, sampling, then dimensionality reduction. I told you, if the dimensionality is less, that is a problem, and if dimensionality is more, that is also considered as a harsh. So dimensionality reductions, then future subject selection. So feature subset selection, feature creation, discretization, and binarization, and tribute transformation. So these are some pre-processing tasks. Let's go one by one. First come to the aggregation. नाम से समझ में आ रहा है, aggregation means combining two or more attributes or objects into a single attribute. ठीक है? Why? Purpose is to data reduction, reduce the number of attributes or objects, change of scales like cities aggregated into regions, states, countries, like that. ठीक है? Then more stable data, aggregated data tends to have less variability. So various reasons may be there for which we need to combine two or more attributes into single attribute, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन. Next is sampling. Main techniques employed for data selections. Sampling करके हम collect करते हैं, data select करते हैं, obviously, sorry. Often used for both the preliminary investigation of the data and the final data analysis. Statistician sample because obtaining the entire set of data of interest is too expensive or time consuming. स्टैटिस्टिशियन क्या करते हैं, आपका पूरे डेटा सेट को कंसीडर नहीं करके उसका रैंडम सैंपल ले सकते हैं, क्योंकि आप पूरे डेटा सेट को आप कंसीडर करोगे वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होगा, राइट? सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं. So sampling is used in data mining because processing the entire set of data of interest is too expensive or time consuming. Key principle for effective sampling. Using a sample will work almost as well as using the entire data sets if the sample is representative. अगर आपने ऐसा सैंपल लिया, ठीक है, जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो दैट इज ओके, वेल डन, राइट. विद हमें पूरा डेटा सेट को कंसीडर नहीं करके हम उस सैंपल से काम चला सकते हैं. ठीक है. So a sample is representative if it has approximately the same property of interest as the original set of data. तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो सैंपल आप ले रहे हो, पहले तो सैंपल सिलेक्शन शुड बी वेरी गुड, इट्स वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, सो दैट जो भी सैंपल आपने लिया है वो पूरे डेटा सेट का प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मोर और लेस. ओके. तो अकॉर्डिंगली सैंपल का टाइप्स है, राइट? कैसे आप कलेक्ट कर रहे हो, सैम्पलिंग कर रहे हो, सो दैट बेस्ड ऑन दैट वी हैव different types of sampling. First one is the obviously simple random sampling. There is an equal probability of selecting any particular item. आप यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप randomly उठा सकते हो सैंपल. जो कोई भी particular item का होना एक equal probability है. ठीक है. Then sampling without replacement. As each item is selected, it is removed from the
population. Then sampling with replacement. Objects are not removed from the population as they are selected for the sample. In sampling with replacement, the same object can be picked up more than once. ठीक है, दोनों समझ में आ गया. Sampling without replacement, each item is selected, so it is removed from the population. जैसे आप आइटम लिया वो मेन पॉपुलेशन से हमने हटा दिया. और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, एक आइटम बार बार हम ले सकते हैं. सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, एक आइटम आपने लिया तो उसको हम पॉपुलेशन से हटा देते हैं. बार बार ना हो. सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में बार बार हो रहा है, राइट. देन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग split the data into several partitions, then draw random samples from each partition. पहले हम क्या करते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछते हैं. पहले हम डेटा को सेवरल पार्टिसिपेशंस करते हैं. डेटा सेट का जो डेटा है उसको सेवरल पार्टीशंस, कुछ मतलब कुछ पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया. और उसके बाद what we do, we draw random samples from each partition. हर एक पार्टीशन से हमने डेटा उठाया. ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा हर एक डेटा से. सो दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. नाउ as you got that there are different types of sampling, and sampling saves a lot of time because we cannot deal with the whole data set if data set is very big. So it is better we can go for sampling. और sampling में आपने देखा simple random sampling, without replacement, with replacement, and stratified sampling. Then curves of dimensionality. When dimensionality increases, data becomes increasingly sparse in the space that it occupies. जब डायमेंशनलिटी बढ़ जाएगा क्या होगा, डेटा को हम जब हम रखेंगे स्पेस में, मतलब इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा डायमेंशन हो गया, बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स के लिए उस डेटा को लोकेट करना पड़ रहा है, तो वो स्पार्स क्रिएट करेगा. डेटा बिकम्स इंक्रीजिंगली स्पार्स इन द स्पेस, राइट. इधर उधर, मतलब अगर इफ आई हैव टू से इन लेमन वर्ड्स, देन दिस ऐसा होगा कि एक डेटा पॉइंट को जब आप रिप्रेजेंट कर रही हो बहुत सारे डायमेंशनलिटी के कारण वो जहां तहां में, मतलब ये यहाँ पे भी स्पार्स हो रहा है, स्पेस में स्पार्स हो रहा है. तो हमें इतने सारे डायमेंशन की जरूरत नहीं है, right? Definitions of density and distance between points, which is critical for clustering and outlier detection, becomes less meaningful. जब हम क्लस्टरिंग करते हैं, जब हम आउटलायर डिटेक्शन करते हैं, उस इस टाइप के केस में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने आउटलायर कैसे डिटेक्ट किया था, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज वो कहाँ कैसे सिचुएटेड है, राइट. बाकी सारे डेटा से कैसे वो बिहेव कर रहे हैं अलग से, और लाइक दैट. आप क्लस्टरिंग भी करोगे तो ग्रुप कैसे बनाओगे, तो इसीलिए हमें इसको डायमेंशन ज्यादा होने से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्ड्स ऑफ डायमेंशनलिटी. Like in this example, you can see here number of dimensions are there, and this is max distance minus min distance divided by min distance. ये हम log ले रहे हैं. So ये randomly generate 500 points. Compute difference between max and min distance between any pair of point. पहले हमने 500 points generate करके उसके बाद maximum and minimum distance generate, मतलब कोई भी एक pair of point का calculate कर रहे हैं. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स वहाँ बहुत सारी जगह पे आपका होगा. सो दिस विल क्रिएट स्पार्स, सो वी नीड टू रिड्यूस द डायमेंशन. Dimensionality reductions purpose, like avoid curves of dimensionality, reduce amount of time and memory required by data mining algorithm, right? Allow data to be more easily visualized, and it may help to eliminate irrelevant features and or reduce noise. ठीक है, तो कार्ड्स ऑफ डायमेंशनलिटी को हटाने के लिए, टाइम को कम करने के लिए, डेटा को और अच्छे से विजुअलाइज, क्योंकि अर्लियर केस में हमने देखा था वो डेटा स्पार्स हो रहा था, उसको विजुअलाइज करना मुश्किल हो रहा था.
आप अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हम उसको प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हैं, एंड इट मे ऑल्सो हेल्प टू एलिमिनेट इररिलेवेंट फीचर्स और रिड्यूस द नॉइसेस। आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, लाइक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, एसवीडी, और कुछ भी अदर सुपरवाइज एंड नॉन लीनियर टेक्निक्स हैं। जो पहले पीसीए, पीसीए का क्या पर्पस होता है? गोल इज टू फाइंड ए प्रोजेक्शन दैट कैप्चर्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन डेटा, राइट? यहाँ यू कैन सी हियर x1 x2 दिस ई। तो ये यहाँ हम क्या टेक्निक यूज करते हैं? वी फर्स्ट फाइंड द इजन वेक्टर्स, और आप लोग बोल सकते हैं आइजन वेक्टर्स ऑफ द कोवेरिएंस मैट्रिक्स, एंड आइजन वेक्टर्स डिफाइन द न्यू स्पेस, राइट? तो ये मैं आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई थिंक दैट विल बी बेटर, बट लेट मी जस्ट ब्रीफली गोइंग थ्रू इट। तो क्या होता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, हम कोवेरिएंस मैट्रिक्स से हम आइजन वेक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, और ये जो आइजन वेक्टर्स होगा ये न्यू स्पेस को डिफाइन करेगा, राइट? यहाँ ये यू कैन सी हियर डायमेंशन रिडक्शन, isomath, construct a neighborhood graph. For each pair of points in the graph, we compute the shortest path distance, right, geodesic distance. Then another way to reduce dimensionality of the data, first redundant features so we have duplicate mass or all of the information contained in one or more other attributes. Example like purchase price of a product and the amount of sales tax space. Then irrelevant features, ये सबको हटाना है, मतलब हमें, ठीक है, रिडंडेंट को हटाना है, रिवेलेंट को हटाना है। कंटेन नो इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर डाटा माइनिंग टास्क एट हैंड, इसको हटा देना है। स्टूडेंट्स आईडी इज ऑफ एन रिवेलेंट फॉर द टास्क ऑफ प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट्स सीजीपीएस। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, स्टूडेंट्स का सीजीपीए को आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें स्टूडेंट आईडी का कोई रोल नहीं है, राइट? देन फीचर सबसेट सिलेक्शन टेक्निक्स, लाइक आप अप्लाई कर सकते हो ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स मतलब सबको ट्राई मारना, ट्राई ऑल पॉसिबल फीचर सबसेट्स एज इनपुट टू द data mining algorithm. Embedded approaches, feature selection occurs naturally as part of the data mining algorithm. Filter approaches, features are selected before data mining algorithm is learned. Then refer approaches, use the data mining algorithm as a black box to find the best subset of attributes. तो ये आपका बहुत सारे टेक्निक्स है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ देम। हम टाइम टू टाइम जिसको जरूरत होगा उसको हम सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। फीचर क्रिएशन, create new attributes that can capture the important information in a data set much more efficiently than the original attributes, right? जैसे आपका फीचर एक्सट्रैक्शन है, डोमेन स्पेसिफिक, मैपिंग डाटा टू न्यू स्पेस, फीचर कंस्ट्रक्शंस, कंबाइनिंग फीचर्स। These are the three general methodologies: feature extraction, domain specific, mapping data to new space, feature construction, combining features and then discretization using class levels. ये भी हम कर सकते हैं. Entropy based approach. Here 3 categories for X and Y and 5 categories for both X and Y. So based on that, we can discretize the values, right? Discretization without using class levels data. These are the data: equal interval width, equal frequency, k-means, right? Attribute transformation, a function that maps the entire set of values of a given attribute to a new set of replacement values such that each old value can be identified with one of the new values. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंटायर सेट को कोई एक न्यू सेट में हम डिफाइन कर सकते हैं। functions we have to use like x to the power k, logarithm of x, e to the power x, mod of x, standardization and normalization, ये इसके अंदर आ जाता है एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्मेशन में। And similarity and dissimilarity. Similarity means numerical measure of how alike two data objects are is higher when objects are more alike, often falls in the range of 0, 1. Dissimilarity, numerical measure of how different are two objects, lower when objects are more alike, right? And then minimum dissimilarity is often 0. जैसे आपका similarity ज़्यादा high होने से 1 होगा,
अब डिसिमिलरिटी होगा तो मैक्सिमम क्या होगा, 0 हो सकता है, मिनिमम सॉरी, एंड अपर लिमिट वेरीज, proximity refers to a similarity or dissimilarity. Now, if you go to this means table, P and Q are the attribute values for two data objects, attribute type, nominal, ordinal, interval, or ratio. Nominal में dissimilarity like 0 if P is equal to Q, dissimilarity नहीं है, right? 1 if P is not equal to Q. ठीक है, तो ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम डिसिमिलरिटी हुआ तो क्या होगा, तो 1 होगा, और इक्वल हो गया तो 0 हो जाएगा, बट इसका ऑपोजिट हो जाएगा सिमिलरिटी, अगर दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा और डिसिमिलर हो तो 0 हो जाएगा। ऑर्डिनल केस में d is equal to p minus q mod divided by n minus 1. Values map to integer 0 to n minus 1, where n is the number of values. S is equal to 1 minus phi q minus q divided by n minus 1. Then interval or ratio में d is equal to p minus q, s equal to minus d, s is equal to 1 by 1 plus d, or s is equal to 1 minus d minus minimum of d divided by max d minus min d. So that way we can calculate the similarity and this. This is very important. We have to calculate it time to time for such type of data analysis tasks. So these are similarity and dissimilarity for simple attributes. Now, there are some distance metrics. Frequently, we will use one, that is the Euclidean distance. You'll get it. Like Euclidean distance is very simple one. We just need to take 2 points, suppose pk and qk. So pk minus qk whole square, where k goes from first to n, 1 to n, and take a square root of that. So where n is the number of dimensions, और डायमेंशन को क्या बोला था मैंने, एट्रीब्यूट्स, एंड pk and qk are the respective the kth attribute or data objects p and q, right? Standardization if necessary is its difference. तो यूक्लिडियन डिस्टेंस आप इस एग्जांपल को ले सकते हो। ये पॉइंट्स हमने ले लिया एक्स वाई के लिए, p1 का वैल्यू सपोज 0 0, y का वैल्यू इसका 2, p2 2 0. So if we calculate the distance matrix, then obviously p1 to p1 will be 0, p1 to p2 will be what, 0. ये आपका 0 minus 2 whole square, right, plus 2 minus 0 whole square, स्क्वायर रूट ले लेंगे। Similarly, p1 pt, p1 4 p4, that way you can calculate, but obviously distance from one point to and the same point will be 0, p2 to p2 0, pt to pt 0, p4 to p4 0. Then one more is there like Minkowski distance. This is thus a generalization of Euclidean distance. Here k goes from 1 to n, pk minus qkr to the power 1 by r, where this r is a parameter and n is the number of dimensions, right? pk and qk are respectively kth attribute of what are the objects p and q, right? Now ये जो है ये जनरलाइजेशन है। आप इसको अगर हमने सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग r is equal to 1, then it becomes city block, right? Manhattan, taxi cab, L1 norm is अलग अलग नाम से जाना जाता है, but city block is the most popular name. A common example of this is the Hamming distance, which is just the number of bits that are different between two binary factors. And if I am taking r is equal to 2, अगर if you consider here r is equal to 2, तो क्या हो जाएगा? If you compare this with this one, this is the equation of the Euclidean distance, right? So if r is equal to 2, then it becomes Euclidean distance, right? And if r is tends to infinity, this becomes supremum distance, L max norm, L infinity norm. This is the maximum difference between any two component of the vectors. So you should not confuse r with n. That is, all the distances are defined for the number of dimensions. So r is equal to 1, it becomes this, this is Minkowski's distance. And for this equation, the general equation is k goes from 1 to n, pk minus qk to the power r, whole thing to the power 1 by r. Agar r is 1, then this becomes city block, r is equal to 2, this becomes Euclidean distance, like that. So this is an example. You can take a screenshot and you can calculate the Minkowski's distance for different values here, right? Now, Mahalanobis distance. Mahalanobis distance, again, P, say between P and Q, that is P minus Q, right? And this sum is the covariance matrix of the input data X.
P minus Q to the power T. So again, this is a very popular one we use. Like you can see, if you go through this diagram, you can see these red points, the Euclidean distance is 14.7, right? These red points, these two, but the Mahalanobis distance is 6. We are calculating with this formula 1 by n minus 1, I goes from 1 to n, xij minus xj bar, xik minus xk bar. तो पहले हम कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं, राइट? Then accordingly we calculate the distance. Like ये आपको मिल रहा है 0.3, 0.2, ए का वैल्यू हमने लिया है 0.5, 0.5, ठीक है? Then similarly B is 0 and 1, C is 1.5 and 1.5. So Mahalanobis distance between A and B will be what? 0.5, 0.5 and 0.1. तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो equation is this one, and we'll get the value 5. Similarly, Mahalanobis distance between A and C, ये है, ये C है, तो क्या मिलेगा आपको अल्टीमेटली जाके 4. Okay. I think we should stop here. We'll discuss the rest part in our next class. But today we have discussed a lot, and these are very important. I request that please go through it. And if there's any problem, and basically the numericals try to solve it, please go through it and let me know if you have any problem. Okay? Is it clear? Okay. Okay. Then let's stop here. We'll meet you in the next class.